skincare mistakes to absolutely avoid. Hi, I am Dr. Shanvi and welcome to my channel. So let me introduce myself. वैसे तो I am a dentist by profession, but this channel is not about teeth. क्योंकि आप सब की तरह even I am obsessed with skincare. Actually, this is my first YouTube video and ये सब शुरू हुआ था 2 महीने पहले जब मैं गई थी दिल्ली फॉर अ शॉर्ट ओरल सर्जरी कोर्स। तो वहाँ पे मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट मेक कंटेंट, मेक वीडियोस इन्फॉर्मेटिव या फिर ऐसे भी व्लॉगिंग और एनीथिंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, टू शेयर लिटिल थिंग्स दैट आई नो। लेकिन आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। पहले तो कैमरा के सामने बोलना वॉज लिटरली अ जॉब फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर डन एनी सच थिंग। फर्स्ट मेरे माइंड में ये इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे एंड एवरीथिंग दे विल जज मी फॉर दैट। लेकिन उसके बाद भी आई मेड दिस वीडियोस, आई मेड ऑल द वीडियोस, आई एडिटेड, मैंने एडिट भी किया था, मैंने खुद से ही सब वीडियोस एडिट किए थे। सो आई डिड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फिर भी I was unable to post it क्योंकि my face was filled with acne. अभी you guys won't be able to see it. Still there are few marks. See here on my forehead. I had acne all over my face. अभी भी है लेकिन अभी बहुत कम हो गए हैं. So I was not feeling confident at all to speak in front of camera और वो भी publicly post करना कि 4 लोग देखेंगे and I look like this with acne all over my face. So finally, after speaking to thousands of people I know and talking to each one of them, I had the courage and मैंने post किए videos. उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा response मिला. People didn't see my acne and pimples, but they saw what I spoke in the videos. तो वहाँ से मुझे confidence मिला कि I should make videos on what I feel, and इंस्टेड ऑफ स्क्रिप्टिंग माई वीडियोज़। पहले मेरे जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ थे वो आई यूज़ टू टेक द स्क्रिप्ट फ्रॉम गूगल और एनीथिंग एंड देन आई यूज़ टू रीड एंड सो ये सब चलते चलते आई नेवर फेल्ट कॉन्फिडेंट टू एक्चुअली स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। इसीलिए आई वॉज डिलेइंग माई यूट्यूब वीडियो only for this reason because I was not at all confident कि पहले तो लोग क्या बोलेंगे, second if I show my face filled with acne I don't know that how I will be able to react to it or what will be the reaction that I am going to receive after posting this videos. Again, finally after doing all of this I am here posting my first YouTube video. So let's get started. The first mistake, very first mistake I did was overwashing my face या फिर using very harsh cleanser because I have a acne prone skin और मेरी skin जो है वो combination skin है and because I am a dentist तो I have to wear mask all the time और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारे pimples हो जाते हैं and उसकी वजह से whenever I work I used to feel very sticky हो जाता है, face oily हो जाता है। तो आई यूज वेरी हार्श क्लेंजर्स, मतलब अपने फेस को 10 बार वॉश करना विद अ फेस वॉश विच completely dried out my face. So skincare mistake number 1, never dry out your face or never use a cleanser which completely dries out your face because cleanser skin को clean करने के लिए होता है, not to completely dry it out of its moisture, So that's something you guys should not do and let me show you. So even if you have a oily skin or acne prone skin like me, you should still use a gentle cleanser. ऐसा cleanser जो आपके skin को completely dry out ना करे. Always use that cleanser. Okay, so I'll show you what cleanser which I'm using. I'm using this right now. It's lactocalamine face wash. इसमें क्ले भी है and it also has niacinamide and vitamin E. तो it cleans your face completely but at the same time ये completely dry out नहीं करता, which is a very important thing for a cleanser to do. So after that I started using this cleanser and I had really good results, so I thought that I'll share with you guys. So किसी का भी if anyone has acne prone skin or oily skin then you can give it a try. You should give it a try. उसके बाद the second mistake which I made guys is asking ChatGPT for my skincare.
मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, बिकॉज आई हैड सच एक्ने, मतलब मैं रोज़ कोर्स को भी जाती थी एंड आई यूज टू वेयर अ मास्क, तो माई फेस वॉज फिल्ड विद पिम्पल्स, यू नो, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे आई वॉज वेयरिंग अ मास्क, यू कैन स्टिल सी द स्पॉट्स, ओके। सो उसकी वजह से आई वॉज वेरी, यू नो, गेटिंग एंशियस कि अभी क्या लगा हुआ है क्या नहीं। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। So I asked ChatGPT literally for a very nice moisturizer जो मेरे स्किन को सूट करे, you know, for a acne prone skin, and I literally used these keywords: oily, acne prone skin, lightweight, all these keywords. उसके बावजूद भी it suggested me this Requel moisturizer. I will also put up a picture here for you guys to see it. ये in general बहुत अच्छा होगा, you know, बाकी users के लिए बहुत अच्छे से वर्क किया होगा, but for me, especially for my acne prone skin, बहुत ही thick है, and as soon as I apply it, I start sweating, you know, literally घर में भी अगर if I apply it on my skin, I start sweating after applying it. So that was mistake number 2, that never use any website for your skincare, because आपका जो skin है it's very exclusive to you. You know, Google and ये सब website पे their information is there. Of course, information is available, but that is a general information. You know कि जनरली ये प्रोडक्ट कैसा है क्या है, बट ये आपके स्किन को सूट करेगा या नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल गारंटीड. So do not do this, guys. Okay, so that was your lesson number 2. Now moving ahead, mistake number 3, which is कि आप सबने सुना होगा, that do not pop your pimples. Even if it is at most satisfying, you should not do that. Okay, क्योंकि पिंपल्स हम पॉप कर देते, उससे होता तो कुछ नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, उससे पिंपल्स तो जाएंगे नहीं. फर्स्ट. सेकेंड इज व्हाट इट डज इज कि वो आपके स्किन पे एक मार्क छोड़ देते हैं. यू नो, आई स्टिल हैव स्पॉट्स ऑन माई स्किन, सी हियर ऑन माई चीक्स, ओके, एंड देयर इज वन मोर, सी हियर, व्हिच आई ट्राइड पॉपिंग, एंड दैट्स व्हाई उस पर रेड स्पॉट रह गया है अभी. And it's not going away, and it will go away eventually, but वो बहुत time taking होगा, and जो भी spots होंगे that will be visible on your skin. So never pop your pimples. Even if it is at most satisfying, you should not do that. Moving on to the mistake number 4. Mistake number 4 which I did was overdoing my skincare. I used 1000 products on my skin at a time. मतलब मैं literally मैं पूरा दिन जब जाती थी तो in the morning I used 10 different products, you know. एक टोनर लगा लिया, 2-3 सीरम लगा लिए, एक मॉइस्चराइजर, on top of it sunscreen. तो what that does is it clogs your skin. वो पूरी तरह से आपकी स्किन को क्लॉग कर देता है, and it does not let your skin breathe. So you should not do that. Despite of whatever skin type you have, आपका skin type जो भी हो, you know, even if it's dry skin, you do not need 10 products at a time. So you should not overdo your skincare. Especially do not use 10 products on your skin at a time. और उस टाइम पे जब आपके स्किन पे पिंपल्स हो, you should let your skin breathe. Because उससे क्या हो जाता है, आपके जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, and that does not gives your skin space to breathe actually. So do not do that. So yeah, these were all the mistakes which I made, and I really wanted to keep my first YouTube video about something that's, you know, related to my personal experience. Script उस पे डालूँ या anything. Actually, I did not want to put anything that was, you know, not real or not from my personal experience, because I really wanted to keep it all real and natural. So these are all the mistakes which I made, and whatever your skin type is, trust me, you should not be doing all these mistakes, okay? Even if you have dry skin, you do not need 1000 products.
So here I am making my very first YouTube video on all the skincare mistake which I made, and also do not forget to tell me ki how you guys felt after watching this video, because that's the reason I made it in very first place. So yeah, I'm very excited for all you guys to see it, and tell me in the comments how you felt, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Bye.